Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon. Thus says the bard in his play Twelfth Night. However, in my session with the respected Dr. Kiran Bedi ma'am, I learned that no matter what, greatness must be utilized. This has helped me grow and develop both my behavior and attitude. Moreover, during the course of the session, Dr. Kiran Bedi ma'am shared some of her valuable insights with us, which were both realistic and truly life lessons. Hence, if you too are interested in developing yourself and growing as a person, then join the book reading sessions. Thank you. I love to read biblical books and to play some of my most loved songs on my guitar. Thank you. Hello, one of my hobbies is playing the keyboard. I like to listen to popular songs and then try and play them on my keyboard. Let me play a song for you. Hello, my hobbies are sketching, painting, and I also like to click photo of our mother nature. Here are some glimpses of my photography. Hi, my hobbies includes singing and dancing, and also I love to participate in different competitions and to collect my prizes. Thank you. Playing video game and to spend my time with my family. I like to play Free Fire and Minecraft. I also like to read before going to bed. It improves my sleeping efficiency. Thank you. Hello, my favorite book series is The Maze Runner by James Dashner. I have read many famous book series such as Harry Potter, Percy Jackson, and The Famous Five, and this series just stands out. Its unpredictability, its twists and turns around every corner, the supposed endings that turn out to be just an illusion. It's mind blowing. I like to read biographies and autobiographies of many famous personalities. In fact, my favorite book is The Wings of Fire, the autobiography of APJ Abdul Kalam. In this book, it denotes his humble origins and his success in his entire life. Thank you. Hello, I like to read about politics and societal change. One of my favorite book is Indian Polity, which is written by M. Lakshmikant. And this book is mainly about our constitution and our Indian polity. And by reading this book, I make myself more aware about our rights, and having information about our rights is very important for our growth and development. My one of the most favorite book is The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. His literary masterpiece talk about the journey of a man towards self-fulfillment and satisfaction, not through mentality but means through interception and self-discovery. Thank you. ये पुस्तक का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता में अनेकों पाठ पढ़ाती है, जिसमें से मेरे कुछ प्रिय हैं। हमें सदैव कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आदमी का शरीर मिट्टी का होता है, परंतु आत्मा सदैव जीवित होती है। धर्म सर्वोपरि है। धन्यवाद। जय धारी माँ, जय धारी माँ। हमारी ऑडियंसेस का स्वागत है। आइए जुड़िए और हमारे बच्चों को खूब सारा प्यार दीजिए और उन्हें मोटिवेट करिए। मम्मी, आप बात करिए बच्चों से। They will introduce themselves and then talk about monuments of our country and then the Q&A.
Welcome, children, to this book reading show of number 114. You are now BR 114. So when you introduce yourself, I'm so and so, oh, ma'am, I'm 114. And I've seen your very good intros. Ishan, I've seen your keyboard play. Priya, I've seen your photographs. How nice. I've seen, and Arpan, you're very good at reading and very fond of reading. I'm very happy to hear that. Astha, you fond of dancing. It's very good. Astha, where is Astha? Astha is not here. Astha? नहीं वो she will join us next week. Join us I next didn't week. connect with Timothy? Deshvi. And Dr. Kalam's, Timothy, you're very fond of Dr. Kalam's autobiography. So you are four of you youngsters with us today. I've seen your creativity and the books you've been reading and your creativity. I'm so happy. So go ahead. I'm very glad to welcome you after your examinations. How were your exams? Did you do well? Ishan, how did your exams go? I think I did pretty well considering the papers. Like at the time of the exams, I was pretty nervous, and yeah, I thought I might not get very good marks. But then finally, I think I did pretty well. Yeah, we were all waiting for children's exams to be over to resume our book reading weekly show. So we had to be very, very patient. We did not want to disturb you children. Priya, how did your exams go? Ma'am, it went good, and I feel I whatever I made hard work, it will show in my result. Superb. And you are interested in polity. You're interested Yes, in ma'am. public affairs. Good. Yes. I'll suggest you what you can. Timothy, how did your exams go? From Went well, Sharjah. ma'am. It went well, ma'am. It was kind of easy, ma'am. And I believe that if you put enough effort, you shall get what returns. So did you take extra help tuitions or were you able to study by yourself and prepare? Now I was able to study by myself, ma'am. Excellent. And Arpan, मैम मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश की और मैं लाया रिजल्ट तो अभी आया नहीं. मैम 10th में नहीं हूँ मैम मैं 9th में हूँ अब अच्छा, मैम मैं रिजल्ट आ गया. अच्छा, यस मैम तुम्हारे 9th का अच्छा हुआ. यस मैम ठीक है, वेरी नाइस, शाबाश. सो गो हेड. आप साइना बता रहे थे आप कुछ बताएंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में. मेरे पास आपके क्वेश्चंस भी हैं, उनका मैं जवाब दूंगी आपकी बातें सुन के. सो अपने ईशान अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ो, सुनाओ. कौन सा मॉन्यूमेंट आपको अच्छा लगा? व्हाई, हाउ डिड यू कम टू दिस मॉन्यूमेंट? ये बताओ ईशान. Yes, From ma'am. Hyderabad. Yes, ma'am. Today I will be talking about the Charminar, ma'am. Ah, So, the Telugu speaking state of Telangana has a rich history and many unique relics that represent its vast legacy, its many monuments. Most of these structures represent many of the dynasties that ruled the state, like the Nizams of Hyderabad, the Qutub Shahi dynasty, and also even the Chalukyas who once ruled the state. So, among all the types of architecture that I've seen in Telangana, I think Qutub Shahi architecture is most influential or most well known. And this is due to the fame of the historical ruins of the Golconda Fort and also the pride of Hyderabad, the Charminar. The Charminar was built by the fifth ruler of the Qutub Shahi dynasty, Muhammad Quli Qutub Shah, after shifting his capital from Golconda to the new city of Hyderabad, and was completed in the year 1591. Built in an Indo Islamic style, the Charminar, as its name literally suggests, consists of four beautifully built 56-meter high minarets with four grand arches, one on each side. It has four floors, with a mosque on the top floor and the minarets being divided at the floors by beautifully carved rings. We do not know exactly why the Charminar was built, but there are many theories or many sayings regarding this. So, one of these sayings is that it was built to commemorate the beginning of the second Islamic millennium year. Another popular theory is that it was built to commemorate the eradication of a plague which was widespread in Hyderabad at the time.
A popular belief is that the Sultan built the Charminar at the exact spot where he first set eyes upon his future wife or Begum, Bhagamati. Such is the popularity of the Charminar that it had 440,000 visitors in the last year alone. So, next time you visit Hyderabad, don't miss out on this great wonder. Thank you, ma'am. Well done, Ishan. So, Thank you, ma'am. but for this book reading, you would have probably not studied the history of Charminar, right? Ma'am, I did study because I am not exactly from Telangana actually, ma'am. I'm from Kerala. So I didn't, exactly know all the history of the Charminar, ma'am. So the book reading has helped you prepare to read about Yes, ma'am. Charminar. I'm so happy. Yes, ma'am. This is new You knowledge never to me. know this kind of knowledge helps you where, and that makes you stand out and earn reputation, earn admiration, earn see positions over others. Saying bright boy Ishad knew about Charminar history, knowledgeable. You never know, and which examination this kind of general knowledge comes. But you've trained all the other three friends of yours as well. Thank you, Ishan. Okay, Priya, your turn. Your turn. So the monument about which I am going to talk is Dhamik Stupa of Sarnath. So Ah, Dhamik Stupa is one of the noticeable structure in Sarnath, and it is also one of the most Buddhist structure in India. And Dhamik Stupa was built by great modern king Asoka in 249 BC. If we talk about the structure of Dhamik Stupa, so it is built of stone and bricks, and 28-meter diameter, 28-meter of diameter at the base, and 43.6 meter its height. And if we talk about why it is situated in Sarnath, so Lord Buddha gave his first sermon at here after attaining enlightenment to his disciples, and he also revealed here the eightfold path. If we talk about what is eightfold path, so it is like eight eight noble practices. Like first is right view, and second is right mind, and third is right speech, and fourth is right intention. Fifth is right mindfulness, and sixth is right meditation, and seventh is right like it is I forget all the things, but it is about our how to build our mindset for the other humanities world, because we need to study about like these things so we can build ourselves a great person. And this is a I good. visit this once in my life and see I saw there are so many Buddhist monks there who comes across the world, like China, Japan, Indonesia, and things like that. That's all I read about this. I know. Where is Karwadia? Ma'am, it is in Uttar Pradesh. It is my village name. Acha, the name of your village. And you went to Yes, ma'am. Sarnath. You What, went ma'am? to you went to see this place yourself. Yes, no, ma'am. I go with my. I go through my school. There, I went हाँ, very good, very to. nice. स्कूल के साथ गए थे. Yes, अच्छा yes, हो ma'am. गया. दोनों चीजें हुई. ये कब गए थे आप? When did you go? When I was in class 10th. तो तब से आपको याद है. Yes, ma'am. ये है प्रिया, ये मैसेज है आप चारों के लिए कि लोकल टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म ऑफ टू हिस्टोरिकल प्लेसेस करना चाहिए. उससे आपको अपनी रूट्स पता चलती हैं, सिविलाइजेशन. हम लोग यूरोप, अमेरिका देखना चाहते हैं, वहां पर जो अब है वो इधर भी है, लेकिन जो इधर है वो वहां नहीं है. Yes, ma'am. आपकी हमारी कंट्री में अब वहां पर सब कुछ है जो वहां है, लेकिन उनके पास वो नहीं है 5,000 सालों की सिविलाइजेशन जो Yes, हमारे ma'am. पास. इसलिए अगर आप जब भी स्कूल ले जाएं, पेरेंट्स ले जाएं हॉलिडे में, तो स्पिरिचुअल या हिस्टोरिकल प्लेस देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे आपको याद हुआ है ना. Yes, ma'am. Okay, Timothy, what is the monument you saw?
Ma'am, I have decided to speak on Hill Palace found in Kochi, Kerala. So the Kochi is filled with Kochi and including Kerala is filled with many temples and other palaces. But one place that stands out from all these places is Hill Palace. Hill Palace is almost in the center of Kochi and is is presently a museum for it's an archaeological museum and is one of the largest in the state. Um, it was built in 1865 to as the residency of the Cochin Maharaja at the time, and it is filled with a traditional style, the traditional style of Kerala, and is accessible to the public by road and rail. It receives many tourists year round, receives tourists year round, and is one of the most famous places to visit. Have you visited? Not got the chance yet, ma'am, but I've visited some places in my own district, ma'am. And how often do you visit home from Sharjah? Ma'am, once every year, most likely, ma'am. And which school are you in Sharjah? Ma'am, Emirates National School. Okay. And you've been here, studying for many years there or recently? Ma'am, many years, ma'am, has been. So, what will you do after the 12th standard? Ma'am, honestly, by 10th, I probably will be going back to India and maybe studying some statistics. Yes, ma'am. Achha. Good. All right, Arpan, what is your monument? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, to आपका giving a कौन सा? opportunity. Now, ma'am, I talk about the Taj Mahal. Taj Mahal needs no introduction. Taj Mahal is a beautiful and most attractive historical place of India. Taj Mahal was built by Shah Jahan and in the memory of his wife Mumtaz Mahal after her death. This monument is on the list of seven wonders of the world. It is situated in Agra, Uttar Pradesh, India, on the bank of Yamuna River, River. And it and attractive, and it has made up of Sangmarmar, which gave a bright and grand look. It it has attractive lawns, beautiful trees, and beautiful fountain, etc. It will remain the symbol of love forever, ma'am. तुम कब गए थे? ताजमहल कब गए थे? देखा था? Yes, ma'am. देखा है? Yes, ma'am. कब गए थे? मैम 8th में गए थे मैम. स्कूल लेके गया था? यस मैम, स्कूल देख. अच्छा, गुड. और क्या बताओगे अपने बारे में? टॉक बुक्स भी पढ़ी, यस मॉन्यूमेंट भी मैम. देख लिया. यस मैम. हाँ. और मैम उसमें बताया गया है कि कोई भी मर जाता है पर प्यार हमेशा जिंदा रहता है उसके ऊपर. Very nice. Oh, nice. मैम उसके That, लिए मैम मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था. हाँ, कमाल है. और क्या बताएगा ईशा? What else would you like to tell me? I'll come to your question answers then. Ma'am, firstly, it's such an honor to meet somebody like you, ma'am. Ma'am, I've only read about all your achievements, everything you've done for the betterment of the country. It's truly inspiring, ma'am. All I've done is lived my work with heart and soul. Yes, ma'am, that's what I find inspiring about you. Yeah. 38 years of policing with heart and soul dedicated. Not only mine, but also of my family. The whole home was actually part of the policing, including my daughter with you. We all loved doing whatever we did as a home, as a unit, as a family. And the whole family gave everything of their own to the work. Yes, Ishan, that's what you will do. That's what will happen with you all of as you grow up.
when you love doing what you're doing, then you'll reminisce like this, what I'm reminiscing. Priya, Yes, ma'am. anything to say before you come to your Q&A? Anything you like to say? Feel like Yes, ma'am. saying? Yeah. Yes, ma'am. I didn't get much exposure in my life, but this is first time for me to interact with such a great people, and I like to thank you and your team to provide us such a great platform where we can learn so many things through this. I'm so happy that this platform is helping you connect with people you would love to have met in person Yes, or ma'am. hear people and ask and converse with. Yes, ma'am. That's why this is called demonstrative learning. It demonstrates, it's demonstrating learning. Yes, ma'am. Demonstrative learning. That's why it's called demonstrative learning. Timothy, how do you feel? Ma'am, I feel, ma'am, I don't know what to say. This is one outstanding chance not only to meet a famous personality like you, ma'am, but also to learn more, ma'am. Because before this meeting, I almost did not know anything about Hill Palace, honestly, ma'am. Yes, good. This is what I like to inspire you all. Always find something new to learn every day. Just as for book reading, you read this and you must have spent about half an hour reading it, right? But if you spend half an hour or even 15 minutes to learn something new, could be a word, could be a vocabulary, could be a quotation, could be a history. It's a good thing to do. And as you grow, you'll be a bundle of so much of knowledge and information. Just as you read school books for your exams, but for your own knowledge and hunger of general knowledge. Do something like that. Put aside 15 minutes of your day. Okay, today, what is it that I learned? It's a lovely habit. Try and do that, Timothy. Just as book reading made you do this, you can do it for yourself. It's like your own reading on your own. So, Arpan, आप बताओ अपने बारे में. मैम पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैम आप सभी वुमेनों के लिए इंस्पिरेशन बनी और मेरा कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी भी मेरे साथ साथ बढ़ रही. थैंक यू Thank you. मैम. तो आप सबको डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग का टीचर ने बताया और डिड यू गेट इट ऑनलाइन? हाउ डिड यू गेट इट, ईशान? Ma'am, I got it because some of my friends have attended did this session before. It was your Yes, ma'am. friend. So I got it from my school. How did you get it? Get to demonstrative learning? How? Ma'am, through YouTube, I generally watching all the previous session, so I just registered for this session. Good. YouTube is a good source of information for many other programs. Timothy, how did Yes, you ma'am. get it? And one of my teachers in the school personally gave me one invitation to join this book reading session, and Right. that's how I did this. Wonderful. And Arpan, आपको कैसे पता चला? मैम इट वाज टोल्ड बाय माय टीचर. Very good. So teacher and friends. यस Teachers, मैम. it's now the word of mouth. See, this is called the word of mouth communication. यस मैम. Yes. Okay, children, we'll get to your question answers. Let me read Priya's. Priya, your question? Ma'am, my question is how we choose a good path in our life, because in this modern era, we see the mind of youth is not stable. साइना, जवाब देना चाहोगे? Question उसने पूछा, how can we choose one good path to go ahead in life, because in the modern era, the mind of youth is not stable. एकदम दो चीजें मन में आ रही हैं. एक तो बेटा आप दो दो कश्तियां हैं, कहीं पहुंचना है तो दो कश्तियों में तो सवार नहीं हो सकते. तो एक इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ आपने पैर दो कश्तियों में रखा हुआ है, तो आप दो कश्तियों में तो सवार हो नहीं सकते. तो उसको एक बार इमेजिन करके देखो. और एक ना, आपने जैसे ही पूछा, एक कहानी मन में आई है. मैं
छोटी सी कहानी है, मम्मी मैं आपके परमिशन से जरा सुनाती हूँ उसको। ये 4 लोग थे एक कश्ती में, उनको एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना था और वो चारों रात को बैठे एंड दे स्टार्टेड रोइंग। तो दे वर रोइंग। जब सुबह वो दूसरी जगह पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को बोला कि अरे ये तो जहाँ से हम निकले थे वैसे ही लग रही है जगह, तो ये तो दोनों जगह सेम है। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि तुम वहीं हो जहाँ रात को थे, तुम लोग इतने बेहोश थे, आप लोग इतने बेहोश थे कि आप रो तो कर रहे थे लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो बेटा बेहोशी तो हटानी पड़ेगी। अगर जीवन में आपको कुछ बनना है और आपको कहीं पहुंचना है और आपको स्टेबल रहना है, आपने वर्ड यूज करा है स्टेबल। स्टेबिलिटी question तब आएगी जब आप बेटा बेहोशी को हटा दोगे। quite right, but उसने क्वेश्चन पूछा how can we choose one good path to go ahead? जी, तो वो बेहोशी How can we हटेगी। बेहोशी select कैसे करोगे? उसका क्वेश्चन है select कैसे करोगे, कैसे चूज करोगे? उसके उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर 1, स्पिरिचुअली इमोशनली आपको बेहोशी हटानी है तो आपको सारे अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस हटाने हैं, आपको काम क्रोध लोभ से ऊपर उठना है। उसके बाद आपको ऐसी हैबिट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसी प्रवृत्ति जागृत करनी है। यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू डेवलपिंग सच हैबिट्स व्हिच लीड टू फोकस। ये रोज कमिटमेंट मांगेगा। आपको अपने लिए एक ऐसी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, ऐसे एटीट्यूड्स बनाने पड़ेंगे जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपको फोकस दे, जो आपको आगे बढ़ाए। तीसरा, आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपकी नेचुरल प्रवृत्ति क्या है, आपको किस काम का हुनर है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आपसे कितनी मेहनत होती है, आपके शौक क्या है, आपका पैशन क्या है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल क्या है, आपका अटेंशन स्पैन क्या है जीवन में। तो So ये जब है तक मतलब आप ये तीनों चीजें नहीं basically करोगे एक साथ, आप एक रास्ते पे कैसे चलोगे? it is to know your mind. अपनी दिमाग, what Saina is trying to tell you, know your mind. तो उसने ये कहा ना, the mind of youth is not stable. और ये जरूरी नहीं है माइंड ऑफ द यूथ इज नॉट स्टेबल, किसी का भी स्टेबल नहीं है, सबको स्टेबल करना पड़ता है। माइंड तो चंचल, जैसे कहते हैं माइंड बड़ा चंचल, इट्स लाइक द विंड, लेकिन आपको विंड को हार्नेस करना है, तूफान से गिरना नहीं। गश्त बड़ा झोंका आएगा, लेकिन आपको उससे कैसे बचना है। कोई किसी ने गिर जाना है उससे, और किसी ने अपने आप को सहारा ले लेना किसी चीज से। सो बेसिकली कमिंग बैक टू माइंड। तो देखो बेटा, यू आर यूनिक नहीं है, हर एक का माइंड का आदत ही है टू बिकम ऑल द टाइम लाइक अ मंकी। वो जंप करता रहता है, मंकी जंप करता रहता है, मंकी का आदत ही जंप करना है, माइंड का भी आदत है जंप करना। लेकिन आपको अगर जंप करके एक पेड़ पे बैठे हो और वो समझते हो कि पेड़ ठीक है, तो उस शाख पे जहां बैठे उसको काटो मत। सो मेन चीज ये, माइंड को स्टेबल कैसे करना है। उस माइंड को स्टेबल करने के बड़े सारे तरीके हैं, और स्टेबल करने का सबसे आसान तरीका है रोज अपने आप को चुप करके कहीं बैठो, आदत डालो, चुप करके बैठो, बस ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ लिखना। धीरे धीरे क्या होगा, उस वक्त माइंड को कुछ और दिखना बंद हो जाएगा, अट्रैक्शन बंद हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएगी, थोड़ी देर उसको रेस्ट मिल जाएगी, तो उसको क्या होगा, रिकवरी मिल जाएगी, माइंड विल रिकवर, स्टेबल होने लगेगा। फिर उसमें क्या होगा, नई सोच जागेगी। जब आपका माइंड स्टेबल है तो नई सोच जागेगी, तो वो नई सोच जो क्रिएटिव है। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम में ही माइंड फंसा रहेगा तो आप जैम में ही फंसे रहोगे। लेकिन
जैम से बचने के लिए साइड में रुक जाओ, थोड़ी देर ट्रैफिक को निकलने दो, भीड़ को निकलने दो, फिर रास्ते में जब रास्ता आ गया फिर ड्राइव करो, नॉन पीक टाइम पे ड्राइव करो। सी इट्स लाइक माइंड इज ऑल्सो ट्रैफिक, इट्स लाइक अ रोड, बहुत सारा रोड, तो उसमें ट्रैफिक की, उसमें बहुत क्लीन ड्राइविंग जरूरी के लिए ये है अपने रूल्स को फॉलो करो। सो इट्स माइंड इज इट्स वेरी वेरी फ्रेजाइल, और जितना स्ट्रांग बनाते वो हैबिट से होगा, प्रैक्टिस से होगा। जो साइना ने बोला है ऑल ये प्रैक्टिस है। सो जब डेली डेली माइंड, तुमने पूछा है हाउ कैन आई मेक द यूथ माइंड ऑफ द यूथ इज नॉट स्टेबल, हाउ कैन आई मेक इट स्टेबल? एंड नंबर टू, देयर आर टू मेनी पाथ्स टू गो अहेड। पाथ टू गो अहेड इस वक्त छोटी उम्र में एक ही तरीका है, माँ बाप से पूछ लो, मम्मी डैडी से पूछ लो, बड़ों से पूछ लो, जहां विश्वास आता है, कंसल्ट देम कि मेरे पास ये दो रास्ते हैं। माँ बाप पूछेंगे, जैसे इसने पूछा, साइना ने कहा अपने आप को देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या फिर बताओ पेरेंट्स को मुझे ये अच्छा लगता है, तो फिर आपको मुझे गाइड करो, मैं कहाँ जाऊं, कौन से कॉलेज में जाऊं, टीचर से गाइडेंस लो, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं जिसमें मैं ये फलाना बन सकूं। तुम फोटोग्राफी में हो प्रिया, तुम क्रिएटिविटी में हो, इंडियन पॉलिटी में हो, तुम सोशल वर्क में जा सकती हो। यस मैम। तुम सोशल वर्क में जा सकती हो, ये तुम्हारा Yes, ma'am. अगर पब्लिक में इंटरेस्ट है तो सोशल वर्क में जा सकती हो, मास्टर्स इन सोशल वर्क भी कर सकती हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आ सकती हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल CSR बड़ा प्रेवलेंट है, तो मास्टर्स इन सोशल वर्क करके आप कंपनीज में सोशल वर्क में जा सकती हो। तो ये जिसमें जो इंटरेस्ट है, लेकिन पाथ्स है ना। अब तेरा इंटरेस्ट मैंने देखा क्रिएटिविटी पॉलिटी में, तो कॉलेज में जाके वॉलंटियरिंग करना, गांव में काम करना, गांव की पंचायत से काम करना, गांव के एनवायरनमेंट में काम करना, गांव के स्कूल में काम करना, ये सारे अच्छे पाथ्स हैं, वो तुम्हें उस लाइन में ले जाएंगे जो तुम्हें अच्छी लगती है। ठीक है, Yes, समझ गए? लेकिन Yes, माइंड को ma'am. स्टेबल करने का मैंने क्या बताया था? माइंड को स्टेबल बनाने के लिए क्या बोला था? मैम, अपने माइंड को कंट्रोल में करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ, मतलब इट टेक्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से लेकिन मतलब उसे सोचे हाँ, रखना है कि हाँ कुछ बोला था कि कुछ देर के लिए क्या करो, शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ, शांति से बैठ जाओ, क्वाइटली यस बोलो, मैम। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना, क्वाइटली। यस तो आप देखोगे बहुत ज्यादा माइंड में ट्रैफिक ट्रैफिक ऑफ थॉट्स आता रहता है, लेकिन एक बार जब खड़े हो जाओगे ट्रैफिक खत्म होने लगता है, शांत होने लगता है। यस तो रोज प्रैक्टिस करोगे तो माइंड को मैसेज चला जाएगा, मैं शांत होना है। यस मैम। ओके ईशान, योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, my question is, you have done so many things for the betterment of the country. More importantly, you have done what you think is right. From fearlessly supporting the towing of a prime minister's car to changing the way a jail works. So I wanted to ask you, at what point in your career did you consider yourself a success? सक्सेस एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, ये भी इस वक्त ये भी सक्सेस है, ये जो मैं आपके साथ हूं ये सक्सेस है। हम आपके साथ जुड़ सके, बात कर सके, आपको कुछ सिखा सके, खुशी बांट सके, आपसे कुछ सीख सके। आपसे मैंने चार मीनार के बारे में सीखा, मैंने चार मीनार देखा हुआ है, लेकिन मैंने थियोरीज आपसे सुन ली। सो ये सक्सेस है। हम तंदुरुस्त हैं, हम खुश हैं, हम वो कर रहे हैं कि जो कि हम चाहते हैं करने को, ये सक्सेस है। और हम कुछ कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। सक्सेस के बड़े लेवल्स हैं। एक है सक्सेस इस वक्त जो हम कर रहे हैं, एक सक्सेस गहरा है, आप तंदुरुस्ती की हैबिट्स है आपकी अच्छी हैं, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू हैव गुड हैबिट्स, यू आर अ सक्सेसफुल इवन। गुड हैबिट्स, good health is success. Efforts to achieve something new is success. These are successful habits, habits which keep taking you towards success. Success is not full stop. Success is a journey, one day at a time, one moment at a time, one day at a time. जैसे हर सब्जेक्ट पे आप
पास अच्छे नंबर नहीं होंगे तो ओवरऑल क्या होगा? हम ओवरऑल फेल होगा। ओवरऑल वो नहीं रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। हम्म, तो सारे सब्जेक्ट्स में, लाइफ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हेल्थ भी सब्जेक्ट है, माइंड भी सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट है ना, पढ़ाई भी सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स भी सब्जेक्ट है, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ सब, दीज आर ऑल सक्सेसेस। अच्छे फ्रेंड्स इज अ सक्सेस, अच्छी तंदुरुस्ती इज अ सक्सेस, बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स इज अ सक्सेस, डूइंग वेल इन स्टडीज एंड लाइकिंग योर एकेडमिक्स इज सक्सेस। ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है और बना के लाइफ बनाती है। लेकिन लाइफ के कितने सारे रास्ते हैं। सो हाउ डू आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेस? हर एस्पेक्ट में जब आप सही रास्ते चलोगे, सही बात करोगे, आप सक्सेसफुल होते जाओ। लेकिन खुशी की बात यह है, जो कल किया था वो कल भी करना है। ये नहीं उम्र चेंज हो जाएगी, आप एक वन डे वन डे ओल्डर हो गए, वन डे ओल्डर हो गए, उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन काम वही करना है, अच्छाई वही करनी है, हैबिट्स वही करनी है। समझ गए? समझे बेटे? Yes, ma'am. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एट व्हाट पॉइंट ऑफ करियर डिड यू कंसिडर योरसेल्फ अ सक्सेस? पूछला जो हो गया हो गया, अब आगे का सोचे, क्या मेरे पास ये काबिलियत, एटीट्यूड है टू थिंक राइट, टू डू राइट एंड वांट राइट एंड गो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? ये so there's no one point, it's all point wise. Yes, ma'am. Okay, good. Thank you, Arpan, ma'am. what about, thank you. Arpan, your Yes, question. ma'am. Ma'am, my question is, how do you take care of yourself in your hard time and do not burn out? अरे जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तेने आज पूछा है कि मम्मी डैडी ने पूछा है? मैम मैंने पूछा। अच्छा, बड़ा छोटी उम्र में बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। मैम तुम बट क्या मैम मेरे को हिंदी आती है तो मैंने मैम ट्रांसलेट करके पूछा। शाबाश, तू बड़ा समझदारी का क्वेश्चन है। ये तो बड़ा बड़ों वाला क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू मैम। हाँ, दैट मीन्स तू छोटा सा लगता है तो बड़ा गहरा। इधर आने से पहले मम्मी डैडी के साथ डिस्कस किया था? मैम थोड़ा सा किया था, पर मैंने खुद ने सोचा मैम आपसे पूछा। बर्नआउट क्या होता है, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, बर्नआउट क्या होता है और हार्ड टाइम्स क्या होता है? तुमने बहुत दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट पूछी कि मैम एक हार्ड टाइम होता है, मुश्किल हाँ, समय, और बर्नआउट होता है जैसे मैम कोई चीज हम मैम जैसे कोई चीज हम करते हैं और बाद में थक जाते हैं, और हाँ, थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। यस मैम। थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, है ना? और हार्ड टाइम्स क्या होता है? मैम हार्ड टाइम होता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल समय होता है। मुश्किल भी होता है या मेहनत मांगता है या इम्तिहान भी होता है या साधन कम होते हैं लेकिन रिजल्ट और चाहिए, है ना? यस मैम एग्जाम्स होते हैं तो मैम वो मेहनत करनी चाहिए, और उसमें हार्ड टाइम होता है कि आप मेहनत करो। अब मुझे आप बताओ कि जब आप किसी सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो या पढ़ाई से थक जाते हो तो आप क्या करते हो? मैम मैं थोड़ा इंजॉय करता हूँ और बाद में थोड़ा मतलब एक्सरसाइज करके फिर से मैं पढ़ने लग जाता हूँ। तो कितना समझदार है तू। मेरा भी आंसर यही है। ओके। मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं भी वॉक के लिए जाती हूँ और वॉक में जाते जाते कुछ और सुनती हूँ। कई बारी खाली वॉक करती हूँ और कई बारी कुछ यूट्यूब का चैनल सुनती हूँ या मैं कोई प्रवचन सुनती हूँ कान से। तो क्या हो रहा है, वॉक भी हो रहा है और दिमाग को खुराक भी मिल रही है, रिफ्रेश हो रहा है और सोच बदल रही है, पुरानी थॉट जो थकावट की वो भाग रही है। या थोड़ी देर सो जाओ, अपने आप को एनर्जाइज कर लो। यस मैम, जैसे स्कूल से आते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ी देर सो जाओ फिर पढ़ लो। हाँ, सो बर्नआउट का मतलब है हम बोर हो गए। यस। सो बोरिंग का मतलब है हम थोड़ा चेंज कर रहा है, कभी म्यूजिक किया या कभी फ्रेंड्स के साथ मिला या माँ बाप के साथ टाइम बिताया या कुछ हॉबी
ने करा, जैसे इसने ईशान ने ईशान ने कीबोर्ड पियानो बजाया, है ना? ऐसा Yes, ma'am. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इंटरेस्ट ले सकते हो आप। So, उससे Yes, ma'am. बर्नआउट चेंज हो जाता है, माइंड की थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसको रेस्ट मिलती है। एक एक माइंड को हिस्से को रेस्ट मिलती है, दूसरा माइंड फ्रेश है, वो वेट कर रहा है कि मुझे भी इस्तेमाल करो। Yes, ma'am. हाँ, तो आप भी कोई ना कोई हॉबी, इसीलिए कहते हैं ना हॉबी क्लास। Yes, स्कूल में ma'am. हॉबी Hobby. तो गेम्स है, कोई गेम खेलो। Yes, ma'am. जब गेम खेलने लगते हो तो वो वाला माइंड हिस्से का काम करता है जो कि रेस्ट कर रहा है एक्चुअली, और पढ़ाई वाला रेस्ट करेगा, गेम वाला शुरू हो जाएगा। Yes, ma'am. हाँ, गुड। सो आपको आंसर खुद ही पता था, Okay, आपने ma'am. से पूछा, लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारी इस उम्र में तुमको ये समझ है। Okay, ma'am. बट गुड क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। Thank you. टिमोथी, योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, according to you, ma'am, what are the morals and ethics needed for someone to become a good reader? So, leader is first a person, remember. First a person. Then he chooses to be a leader. Or somebody decides to remain a follower. It is like, for instance, a saint or a teacher. Teacher is first a student, then he becomes a teacher. Police officer is a person first, then he becomes a police officer, then it's a position. Politician is a person first, then he chooses to become a politician. Is that right? Is that right? Or these are leadership positions. Why are they leadership positions? Because they all have followership. Leader is a leader because there's a followership. Otherwise, he's not a leader. Leader is also a person who influences others because he has something to give. Teacher influences you. Dr. Kalam, you said, I think you wrote Dr. Kalam's. Why are you influenced by Dr. Kalam? Because he influences you. He impresses you, isn't it? He was a leader. But was he born president? Was he No. born a scientist? What did he do? He grew up to be a good human being. He grew up to be a simple, good, honest human being. Simple, honest, good, and very respectful to everything. And he also valued everything. He didn't believe in wastage. I have been to his museum. I've been to Dr. Kalam's museum. Have you been there? Ma'am, no, ma'am. Do visit it. I think it's somewhere in the south, जहाँ डॉक्टर कलाम का म्यूजियम बना है. डू यू नो वहां पर उनकी उनकी रबर की चप्पल पड़ी है म्यूजियम में, Yes. और रबर की चप्पल पे टांका लगा हुआ है. दैट मीन्स वो जो टूटी थी रबर की चप्पल उनकी, उन्होंने फेंक नहीं दी थी. ही टुक इट टू द कॉबलर एंड गॉट इट करेक्टेड एंड मेंडेड. उनकी चप्पल पड़ी, मेरे पास फोटोग्राफ उस चप्पल की. हम लोग चप्पल सी थोड़ी सी खराब होते फेंक देते हैं, उन्होंने फेंकी नहीं, उन्होंने उसको he got it corrected. Sorry, I think you don't understand Hindi maybe. He Ma'am, got it, yes, ma'am, yes, ma'am. he got it mended. So he was a scientist, so he was a leader, but he was a person in that leader. And to be a leader, first you have to grow up to be a good person. Right? Ma'am. So you might ask me, ma'am, how can a tree be a fruit bearing tree? Yes, ma'am. First of all, the seed is selected by nature, and then the gardener plants it. And then the gardener nourishes it, gives it sunlight, gives it water and nutrition. Then the plant keeps growing. And then it bears fruit. And then it doesn't eat its own fruit. It throws its own fruit. It lets it go. See, it shares its fruit. It doesn't say, oh, don't take my fruit, I want to eat it.
the tree becomes a leader in fruit bearing. So the leader is first a good person. And when that good person is influencing and has followers, he becomes a leader. Yes, ma'am. Because, and how do you influence? By giving. It is your spirit of giving which makes you a leader, not spirit of taking. It's give. Why do many priests, saints, Mahatmas have so much of following? Why? Because Ma'am, they all what? What are they? Why they are they so? influence, ma'am, they Huh? influence others. Ah, they influence others and they become models for others. People want to be like them because they are simple, they're educating, and they're giving, and they're blessing you without saying something in return. So, leader is not one who is in a very great position of a chair, but behind the leader is a person. Now, second, there's a second category of leader who just occupies your chair, but people don't have, they have no followers. Moment they go, people are very happy he's gone. They're very happy. He's gone. Thank God he's gone. That person is not a leader. He's an imposed leader. One is a loved leader, and this leader is only a leader. He's not a leader. Actually, he's just in that position. Leader is one who is followed whether he says follow me. Whether he says follow me, people follow. And that person is not a leader who say follow me. People say no, we don't want to follow you. That's not a leader. He's only assuming and thinking he's a leader. So leader is loved, leader is respected, leader is admired, leader is remembered, leader is read. Like you read about Dr. Kalam, isn't it? Did Dr. Kalam write that please read me? Ah, these are the chappals. See this? These are the chappals. Yes, ma'am. Our desk. See, our desk is so sharp. These are the chappals of Dr. Kalam. See that? Did you see Yes, that ma'am. affair? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh. Yes, ma'am. This is, I think Shivani probably traced it from my Twitter handle. Shivani traced it, I bet, from behind the desk. Saina, it's Shivani who did it. Traced the chappals of Dr. Kalam, slippers of. So that's a leader. So if you want to be a leader, then be a good human being, you'll have followers. Good friend will say, hey, that friend he's a very trustworthy. Timothy is very trustworthy. He's a good human being. He loves, he's very respectful, he's very giving, and he's very joyful, and he's very kind. That's a leader. You're already developing to be a leader because you're already having a following. So a leader is who has a genuine following and who's loved genuinely. So I think this is what if so you become a good. Acha, you also said to become a good reader. You also question is needs to attain to become a good reader. Good reader would mean, Timothy, your question is saying this. What are the values of a person needs to attain to become a good reader or a leader? Ma'am, I actually said good reader, ma'am. Okay, all right. Let me come back to reader then. To be a good reader is, well, first of all, you can do speed reading exercises. There are many good exercises on speed reading where you read from the center and keep reading through, and you can become a speed reader. So, A, do courses on speed reading. Secondly, choose the book of the month, book of the week. Choosing a book of the month or the week is good idea. That's your target. You can make a target of saying, this month I will finish with these two books. So come what may, you will even take that book to the bathroom. You'll even take the book along with while you're traveling, you will read because you have a target of two books. So how to become a good reader is two things. Target your reading goals, and secondly, speed reading courses you can do. Then you can read faster. Some people are very fast reader. Swami Vivekananda could just flip through the book
and he would remember every page. He had such sharp memory. He was a great reader. That's why till such a young age, look what he's written, how much he's written, because he read all the ancient scriptures. Why? He had elephantine memory. He was gifted, spiritually gifted, but he was a reader. So all these people whom we remember now, so was Dr. Kalam. They were all very good readers, but they also become leaders. Readers do become leaders because they start influencing others. Because reading gives you knowledge you want to share. But it is also a habit. Now today, one is a hard copy, hard book reading. The other is it's available all on the internet. Books are available on the internet. Um, uh, Books are read and spoken on the internet. So you can listen to a book, you can read a book. Here you talked about reader, and for reading is speed reading and goals oriented. And choose the author you want, subject you wish, and then target that these are my 2 books of the month. I've got to finish them. So your target would be then find the time to read. Yes, Okay, ma'am. friends? Any Yes, other ma'am. suggestion any one of you can make on this question of his, Timothy's question? How can you be a good reader? Isha, any idea? Yes, Saina, anything? How can you be a good reader? Because you're a very good reader. I'll do a little sum up. In that, I can include my Yeah, you can do the summing up. I just Ji, have now left a few minutes only. ji. Please sum up. Based on all the questions you've asked, there are a few things coming to my mind, and I'm quickly sharing them with you. I can't really recall the story I read as a teenager. That's what's been coming to my mind ever since looking at you all teenagers. I don't remember the story, but I remember what stayed on with me. There's a person holding a cup. So somebody comes and उसको धक्का लगता है. वो धक्का लगता है तो जो कप में होता है वो स्पिल हो जाता है, गिर जाता है. तो जो कप में होगा वही गिरेगा ना. कप में चाय है तो चाय गिरेगी, कॉफी है तो कॉफी गिरेगी. This is what your inside is all about. When life shakes you up, or when tough times shake you up, what's going to come out of you is what is inside of you. जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा when you're shaken up. So that space needs attention. आपके अंदर क्या है? दूसरी बात, आपने रीडिंग की बात करी. बेटा, it needs to be a need and a want. Reading. You read everything then. आपको सुबह न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक ब्रोशर आता है. Like to go through that also. You're in a plane, you like to read what's there. You see signage, you like to read that also. You like to read your books. You like to do quick reading. You like to do. It needs to be a need and a want. Reading needs to be that sacred to you. अर्पण, मैंने एक कोट लिखा था, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके फिर टेक अवे को पूरा करेंगे. उसमें लिखा था, डू यू वांट इट मोर और डू यू फियर इट मोर? डू यू वांट इट मोर और डू यू फियर इट मोर? तो जो भी आपको जीवन में चाहिए वो आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और वो आपके कोर वैल्यूज के साथ कितना अटैच्ड है, फिर वो आपको थकने नहीं देगा और आपको रुकने नहीं देगा. सो वो फियर इट मोर में वो चीजें आ जाती हैं कि आप थकोगे नहीं और आप रुकोगे नहीं. लेकिन जो आप चाहते हो, आप कितना चाहते हो उसको और क्यों चाहते हो, और वो आपके अंदर की वैल्यू सिस्टम के साथ कितना मर्ज करा हुआ है, कितना अटैच्ड है. यू वांट इट मोर
or do you fear it more? So इन चीजों पे थोड़ा सोचना, रिफ्लेक्ट करना, and माँ bless you all. हरी माँ bless you all. जी. Thank you, children. We will stay connected. You will be part of our BR book reading group and keep getting morning nutrition. All right? Thank you so much, Ishan, Priya, Timothy, and Arpan, right? जी. Once again, thank you, ma'am, for this great opportunity. Lovely. We'll stay Thank you, connected. ma'am. Thank you, God ma'am. bless you. Thank Do you. well and be a proud student of your school and proud member of your family, Arpan, Timothy, Priya, and Ishan. Thank you and God bless you. जी. Thank you. Thank you, ma'am. जी. जी. जय धारी माँ बच्चों, जय धारी Thank माँ. हमारी ऑडियंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. आपको मिलेंगे अगले हफ्ते. थैंक यू. जी. जय धारी माँ. Thank you, ma'am.